Good evening, everyone. In this meeting, we are going to discuss the concept of designer babies, which will be related to uh, tampering with the embryo inside the mother womb, and we'll be discussing various factors related to it. We may start. It's in vitro fertilization, that pre-implantation Ah, genetic diagnosis, that yes, genetic yes. disorders to the baby is not fertilized properly, egg cells Yes, from it's Ah, a from the it's a topic like from biotechnological it's a methodology. We genetics. try to yes, biogenetic engineering. We try to alter the genes of the zygote of the baby so that we are able to correct any genetic disorder before the birth of the baby itself. And this can help in eliminating the risk of different genetic diseases and cancers, which might be uh, which might lead to hampering of the lifestyle of the child once he or she is born. So it's through biotechnology that we correct those defects. okay. Hmm. Sonali, you can tell us something. Like, Yeah, me not prepare, but I will try. Just a yes, it short. is a field. Hmm. Yeah, mainly टेक्नोलॉजी ये इसलिए आया था क्योंकि कोई भी जैसे बेबी को प्रॉब्लम है या कोई भी उसके जैसे हमारे कितने होते हैं 23 46 देन कोई भी 45+XY, तो उसको कोई भी सिस्टिक फिब्रोसिस है या कोई मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उसके लिए ये लाया गया था ताकि कोई भी बेबी है वो सफर ना करे। मतलब कि जो उसके डीएनए है उस सेल्स हैं वो प्रॉपर रहे, कोई भी जैसे अभी वृंदा ने बताया कि कोई भी डिजीज कंडीशन को उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि हेरिडिटरी हो ये जो डिजीज कंडीशन है वो उसको हेरिडिटरी हो रही है और उसकी लाइफस्टाइल पे भी काफी ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज का। Hmm. और ये ज्यादातर जो है वो रिच पीपल ही है वो मतलब इसको अफोर्ड कर पाते हैं काफी ज्यादा, और इससे जो डैमेज पॉसिबिलिटी भी है कि जो जीन पूल है वो भी डैमेज हो सके, और ये स्टिल अभी एक्सपेरिमेंटल ही चला है आई थिंक। हाँ, okay. So this concept of designer baby, I अगर think इसके it was, start, हाँ, बोलो. I was saying that I think it was first started in China. The Chinese scientist who developed for the first designer baby, and the gene editing technology that they use is called CRISPR-Cas9 DNA editing technology. It is a molecular scissors which is used to eliminate the unwanted part of DNA of the baby and replace it with the correct codon or the protein code, which will then produce the correct set of proteins which are desirable for the development of the child. The benefit is that diseases can be eliminated and lifespan of the child can be increased. The parents can, it's like customizing a child for themselves and keep those traits in the baby which they want and eliminate the others. But the negatives is that it can damage the gene pool and it can lead to loss of individuality, and a big concern with the ethical side of this practice is also in our site. So yes, that's it. Okay. So, this concept of designer baby, if we look from the starting, it we can connect it with the Human Genome Project, which was from first Human Genome Project, which was from 1990 to 2003, and which was started by USA. So, it all comes under the genetic engineering concept of genetic engineering. Likewise, when we develop this, you all would be knowing, no? We develop insulin hormone by genetic engineering for the diabetic patients. Likewise, we get this from genetic engineering only. We get this opportunity to hamper with the cells inside the
to hamper with the embryo in the starting early stage and make some positive changes or positive changes into it and get some desired results, which can be in terms of getting better health. Okay, so firstly, in the stem cells, which we get from the bone marrow, plus from the in the early embryonic stage, we get it from the cord. What is name of that cord? I'm forgetting. Sorry. Uh, that cord which is joined from mother to the baby at the time of the birth. Umbilical cord. Yeah, umbilical cord. Yes. So either we can get the stem cells from there or we can get it from the bone marrow of an adult person. Okay, so what happens in this is that the designer babies, we can get it from stem cell therapy, from cloning, from in cloning from the process of SCNT, that is somatic cell nucleus transfer, and another one is TPIVF, three-parent in vitro fertilization, and last one is this surrogacy. Okay, so there are four possible methods for getting a designer baby. So in the stem cell, uh, which are useful, stem cells are useful to treatments of the blood cancer, sickle cell anemia, and sickle cell anemia, thalassemia, etc. So in this, we just one second. Mm, Yeah, so stem cells are useful for generating of new organs and tissues, and in treatment of many other damaging diseases. So uh, when this process is happening from the SCNT, somatic cell nucleus transfer, from there was this experiment. Uh, you would be knowing this Dolly the sheep experiment, which was the process of cloning, which we got from the process of cloning. In this, there were three different sheeps. One was the mother sheep, second was the egg donor sheep, which was a which was also female, and third one was the surrogate sheep. From the mother sheep, we got the somatic cell out. From the egg donor sheep, we got the egg, and the nucleus was taken out from the egg, and from there, we transferred the nucleus from the mothership cells to the empty egg of the egg donor ship, and then we transferred it to the surrogate mother. So we got the Dolly the sheep. This was the first cloned sheep baby. So it had the all the characteristics and physical appearance of the mothership. So this was the concept of cloning. Likewise, we can have the concept of designer baby. So in this designer baby concept, like Brinda said, we get the DNA and take out the particular segments. When we take out the particular segments, it is known as gene silencing. And when we add on something to the genes, then it is known as gene silencing and other. When we add on, then it is genetic. Genetic engineering. So concept of designer baby is useful to us as just just a minute. Can someone continue? I'll just give me 1 minute. Yes. Yeah. So, like, why we should have the designer baby? First one is that we can have enhancement of desirable traits. Second, we can have
future medical advancements and parental empowerment with evolutionary improvements. About the enhancement of desirable traits, by selecting specific genes associated with the desirable traits, such as intelligence, athleticism, or creativity, designer babies could potentially lead to a generation of individual with enhanced abilities and talents. The next one is the elimination of genetic diseases. The designer baby could be created using gene editing technique like CRISPR-Cas9. So, if you guys want, I can tell something about CRISPR-Cas9. I can also provide the notes if you guys say. Yeah, that would be very helpful. So, see, what happens in this CRISPR-Cas9 is that a bacteria is like how CRISPR-Cas9 works is that inside a bacteria, when virus attacks it, the CRISPR-Cas9 via the process of CRISPR-Cas9 is not in role now. Inside a bacteria, when virus attacks it, via the method of transcription, RNA is produced from DNA, and this RNA is guided by CRISPR-Cas9, which sends a message. This RNA sends a message to the virus DNA, and it goes and breaks the Cas9 goes between the RNA, the CRISPR-Cas9 goes with the RNA message to the virus and breaks the virus DNA from between, and hence the virus gets eliminated. So CRISPR-Cas9 is the most advanced and accurate technology to modify it or edit genome of an organism. It is naturally present in bacteria as an immunity system against against bacteriophage or viruses. So first discovered in 1987, it also got Nobel Prize in Medicine, and it was considered as one of the biggest scientific achievement of the decade. I don't have the date. Okay, in 2007 and 2012, it was used for the genome editing for the first time. Now, gRNA, which was the guided RNA, which is formed through transcription from CRISPR DNA, and it has genetic address of the target DNA. Target DNA will be the virus, DNA of the virus or bacteriophage. So, in laboratory, the genetic address of guide RNA can be changed, and a new DNA or gene can be targeted. This approach can also be used in gene therapy and genome editing. So there were certain benefits of CRISPR-Cas9, like when the Chinese scientist Zheng Kui modified the genome of an embryo to make it HIV resistant, and twin babies were born out of this experiment. It was highly controversial at that time. Editing with the embryo is totally banned all over the world, but Chinese scientists still did it in 2018 only. So there are many issues and concerns with CRISPR-Cas9. See, we are discussing CRISPR-Cas9 because if we go for the concept of designer baby, CRISPR-Cas9 is the best available method for molecular scissoring. So we are discussing about CRISPR-Cas9. So issues are that only this Shivam, concept. wait. Then there is a no. What about then Human Genome Project? Then there will be no use. No, nothing like that. No, Human Human Genome Genome Project. Project is a project in which the entire genome is studied. What all genetic makeup individuals have, and what kind of a codon, मतलब 3 sets of codes, जैसे हम पढ़ते हैं ना ATGC, इनके codes होते हैं Haploid हमारे पूरे chromosomes, set. DNA के अंदर तो what is the genetic makeup, what codon is responsible for production of which kind of protein, what is the effect of that protein on human body, and what
what happens in case the codon is disturbed in any way, what medical problem arises due to it. The entire study of this is the Genome Project. So it is a research work, and it is only helpful only. It's not that it's a waste, it's contributing to our knowledge only. And it's Hmm. through these kind of studies these that make the foundation on which we build up our further research work, and we come up with technological advancements and try to correct the problems that occur in individuals. That's how this works. Yeah. Regarding Sonali's question, main Sonali, the चीज that first the human LC is नहीं wait तो main चीज तो LC is also important ना in that is ethical, legal and social issues is also important for this. yes, it is. That is why concept of designer baby is banned because of these issues only, no? Yeah. So regarding अभी this तो we human were just genome project, discussing कि डिजाइनर बेबी बनता कैसे है. अभी तो we learned that much. हाँ, अभी उससे होने वाले challenges and issues क्या हैं और क्या क्या concerns हमारे हो सकते हैं इससे related, अब हम वो करेंगे discuss. yeah. उससे पहले बस ये सोनाली ने जो पूछा था, I'll tell that. See, the Got it. first human genome project from 1990 to 2003, this was READ, HGP READ, which is in which we read about the under this entire project. We read the entire human genome. It was studied for the first time, and the basic pair of sequence or genetic sequence of human genome were determined. Yeah, this process was also known as gene sequencing or gene mapping. This was back in 1990 to 2003. And second one, Human Genome Project, right? Okay, from 2016 to 2026, it is still going on. This project is Yes. initiated by Center of Excellence of Engineering Biology. This project aims to create a genomic data on a computer and conversion of this data into artificial human genome. In other words, we can say that genetic data will be written in human being DNA. Okay, this artificial human genome will help in better understanding of human genetics. Likewise, we have Earth Biogenome Project from 2018 to 2028 still going on. In India in genomics, okay, Genome India Project 2020-2020. This project is running under the guidance of Department of Biotech and IISc Bangalore. The genomic study will be done on 10,000 Indian citizens of different destinations, which will help us to understand the genetic basis of diseases which affect Indian population, such as diabetes, mouth cancer, lung cancer, etc. See, there is one important thing: INSACOG, INSACOG. This SARS-CoV-2 Consortium for Genomic Studies. Just forget last name. In September 2020, India established a network of laboratories for genome sequencing of coronavirus to discover any new variant of coronavirus. In this joint venture, Health Ministry, Department of Biotech, CSIR, and ICMR came with the SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. So this was set up for discovering any new variant of coronavirus, which was under the guidance of Health Ministry Department of Biotech, CSIR, Center CSIR का full form? Yes, CSIR full form. Council of Scientific and Industrial Research. Yes, Council of Scientific and Industrial Research, and ICMR is Indian Council for Medical Research. so under this both we had establishment of first laboratories in 2020 only. So this was important point inside this. तो pros and cons discuss कर ले genetic babies का. हाँ. बेसिकली व्हाई इट इज बैंड, क्योंकि जैसे सोनाली ने कहा था कि एथिकल और सोशल कंसर्न्स हैं इसके साथ, लाइक सोशल इनइक्वालिटी इनहेंस करेगा और एथिकल कंसर्न्स देगा, जैसे कि डिजाइनर बेबी
raises significant ethical questions regarding playing with the genetic makeup of human beings. Deciding a child trait before birth raises concerns about the right and autonomy of the child. Plus, it will have lot of unintended discriminations. Like they might face discrimination from society due to concerns about genetic superiority or unfair advantages. और कुछ भी ऐड करने को है तो कर सकते हो. Health and environmental issues. कौन सी issue? Health and environmental issues. हाँ बिल्कुल. What if we have a genetically modified baby and he is not able to cope up with the evolution, like what happens after next 10 years? What if he's not able? और चाइल्ड राइट्स का भी इशू हो सकता है कि इट्स अगेंस्ट द विश ऑफ द चाइल्ड कि हम चाइल्ड की अप्रूवल के बिना उसकी बॉडी में ऐसे चेंजेस लाना चाह रहे हैं जो शायद वो एक्सेप्ट ना करे बड़े होकर. Yes. Please continue. I'll be back in 1 minute. Commercialization of products. और इससे होमोजेनाइजेशन भी हो सकती है क्योंकि पेरेंट्स विल वांट कि सबके ही बच्चे इंटेलिजेंट हो, सबके ही बच्चे एथलेटिकली काफी स्ट्रांग हो, तो इससे सोसाइटी में होमोजेनाइजेशन काफी ज्यादा हो जाएगी. तो अगर होमोजेनाइजेशन होती है एंड जीन पूल की डाइवर्सिटी कम होती है तो उससे वल्नरेबिलिटी इंक्रीज होती है. कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज अगर फैलनी शुरू हो गई तो वो सबको बहुत ज्यादा हार्म कर सकती है एंड इट कैन स्प्रेड वेरी फास्ट. और सबके कोप करने का मैकेनिज्म भी बराबर ही होगा लगभग क्योंकि जेनेटिक मेकअप. रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी आ सकते हैं उसको. Why not? Let's discuss the benefits. Benefits भी तो हैं यार. Pros भी तो हैं इसके. प्रोस तो यही हो गया कि जो जेनेटिक डिजीजेस हैं उनको हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकेंगे एंड लाइफ स्पैन ऑफ द चाइल्ड विल इंक्रीज. vulnerability to other diseases can be stopped at the very beginning जिससे कि हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम होंगे एंड मेडिकल बिल्स कम होंगे. पेरेंट्स को हेडेक कम होगी और बच्चे की लाइफ काफी अच्छी होगी. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा एंड वो इकोनॉमिक एसेट की तरह एक्ट करेगा इन फ्यूचर रादर देन बीइंग अ लायबिलिटी. हम्म. कपल्स So के लिए हाँ बोलो. बैलेंस जेंडर इन देयर फैमिलीज. बट ये थोड़ा डिबेटेबल नहीं हो जाएगा? हम जेंडर बैलेंस कैसे इंश्योर कर सकते हैं डिजाइनर बेबी के थ्रू? वो तो बल्कि और ज्यादा मतलब रिफ्ट क्रिएट करेगा कि अब पेरेंट्स ही अपने बच्चे का सेक्स सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे. तो क्योंकि हाँ. इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ साथ वो असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी भी तो यूज कर ही सकते हैं. हाँ ये भी हो सकता है. तो ये तो फिर कॉन्स में ही काउंट होगा ना. मैं ये कह रही थी कि मेडिकल ग्राउंड्स के अलावा हम बाकी एस्पेक्ट्स में एक बार इसके प्रोज सोचने की कोशिश करते हैं. मेडिकल तो हमें पता लग गया कि हेल्थ अच्छी हो जाएगी, और बाकी जैसे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोई ऐसे बेनिफिट सोचने की ट्राई करते हैं. पेरेंटल आई एम्पावरमेंट हो थिंक सकता है. इसमें
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हम काउंट कर सकते हैं कि एक बार हम इस टेक्नोलॉजी पे पहुंच गए हैं तो फर्दर हम और इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंश्योर कर सकते हैं एंड रिसर्च वर्क में हेल्प कर सकता है। इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन्स आई थिंक इससे बढ़ जाएगी क्योंकि हम अपने जीन्स को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जो मेडिसिन हम फार्मास्यूटिकल कंपनी जो डिजाइन कर रही है वो भी फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिजाइन कर पाएंगे और कस्टमाइज्ड मेडिकेशन अवेलेबल होगी इन केस अगर फ्यूचर में कुछ जरूरत पड़ती है तो आई थिंक ये टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बेनिफिट हो सकता है। पेरेंटल एम्पावरमेंट, इसमें लाइक पेरेंट्स को एबिलिटी मिल जाएंगी ना टू इन्फ्लुएंस देयर चाइल्ड्स जेनेटिक मेकअप एंड एनहांस देयर सेंस ऑफ एम्पावरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोटेंशियली स्ट्रेंथनिंग द पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड। अगर मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे जब पेरेंट्स के उससे, तो पेरेंट्स का लगाव भी तो उनसे बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा। आई थिंक कह सकते हैं। lowering और of the इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सोचे तो मेडिकल हमारा जो सिस्टम है उस पे बर्डन रिड्यूस होगा क्योंकि एलिमेंट्स कम हो जाएंगी। जैसे अगर हम डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जेनेटिक मेकअप इम्प्रूव करते हैं तो इंडिया में जो हेल्थ है इंडिविजुअल्स की वो काफी इम्प्रूव हो जाएगी और वो और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे नेशन बिल्डिंग। हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और जैसे कि अभी कैंसर एंड HIV जैसे बहुत हार्मफुल चीजें हैं जिनका मेडिकल बिल बहुत ज्यादा आता है वो कम हो जाएगा, लोगों को बर्डन कम हो जाएगा। स्पेशली जो लोअर स्ट्रेटा से हैं एंड जो इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है उनके लिए अच्छा होगा। हम्म, हाँ तो मतलब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, we can have this concept like ban क्यों करना, we can have it and we can have it with certain regulations, stringent regulations and ethical guidelines which can ensure the responsible uses. इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रिंजेंट लॉस तो होने चाहिए लेकिन प्रायोरिटी उन केसेस को देनी चाहिए जहां पर एक्चुअली मेडिकल केसेस हैं, जहां पर एक्चुअली मेडिकल रीजंस की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग हम अडॉप्ट कर रहे हैं, ना कि और शैलो चीजों के लिए जैसे कि एस्थेटिक अच्छे हों या बच्चे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले दूसरों के ऊपर कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ये सब कंसर्न्स को मतलब हमें उतना प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए जितनी कि हमें मेडिकल कंसर्न्स को प्रायोरिटी देने की जरूरत है, वरना इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। हाँ, लॉज सिर्फ इसी पॉइंट के रिगार्डिंग चाहिए होगा कि मिसयूज ना करें, बिकॉज इफ दिस विल कम इट विल बी हाईली लाइक कॉस्टली, है ना, सो एंड नॉट एवरीवन will स्मृति be able सेन to। की लाइफ स्पैन भी इंक्रीज होगा। लाइफ स्पैन अगर जरूरत से ज्यादा इंक्रीज होगा तो वो नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब करेगा एंड ऑलरेडी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं तो रिसोर्सेज पर भी स्ट्रेस पड़ सकता है एंड कंपटीशन इंक्रीज होगा जिससे चैलेंजेस फिर इंक्रीज होंगे फ्यूचर में। risk ये of सब disease in future generation भी तो कम होगा, जैसे आपने एग्जांपल दिया था HIV का, कैंसर का, तो वो भी तो कम हो रहे कम होगा हैं। कम होगा लेकिन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ एट द टाइम ऑफ बर्थ कर सकते हैं कंट्रोल। एक बार जब बेबी बॉर्न हो गया तो इट डजेंट मीन कि उसके बाद उसमें जेनेटिक चेंजेस आ नहीं सकते क्योंकि रेडिएशन और काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कार्सिनोजेनिक मटेरियल हैं जो फिर भी इंड्यूस कर सकते हैं, कोई और चेंज हो सकता है बॉडी के वो भी अंदर उसको जिससे फिर डिजीज डिजीज फिर भी कंडीशन डेवलप हो सकती है। भी उसको ना, फिर भी 100% डिजीज फूल कंडीशन प्रूफ तो तो हो हम सकती है इसको फिर उसको, भी नहीं कह सकते। डिजीज क्या कह रहे हो? कंडीशन तो फिर भी रहेगी, मतलब डिजीज फिर भी हो कंडीशन तो सकती है, हो हाँ। सकती है और उसको। जब ऐसा होगा कि जेनेटिक होमोजेनाइजेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि सबके ही जेनेटिक मेकअप एक जैसे हैं तो कोविड जैसा कोई और वायरस
एक बार आ गया तो इट कैन स्वीप द एंटायर पॉपुलेशन इन वन गो, क्योंकि सबकी रेजिस्टेंस की पावर भी लगभग बराबर ही होगी ना। कोई ऐसा नॉवल वायरस आ गया कि जिसके अगेंस्ट इम्यूनिटी किसी भी चाइल्ड में नहीं है, तो वो सबको ही हार्म कर सकता है। तो इसमें जरूरी थोड़ी कि इम्यूनिटी सबकी सेम ही हो, सेम ही लेवल की हो। बट पॉसिबिलिटी है, इसको हम मतलब निग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। कंसर्न तो ही रहेगा ही, 100% तो कुछ भी ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। वृंदा, लास्ट पॉइंट को फिर से रिपीट करोगी प्लीज? मैं ये कह रही थी कि अगर जेनेटिक पूल में होमोजेनाइजेशन हो, मतलब सबका जेनेटिक मेकअप एक जैसा होने लगे, तो मान लो फ्यूचर में कोई ऐसी डिजीज अगर होती है, कोई ऐसी डिजीज पनपती है, वो एक इंडिविजुअल को होगी तो सबको हो सकती है। कोई एक ऐसा जेनेटिक मॉडिफिकेशन आ गया, वो फर्दर प्रोपोगेट होके सबको हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। और सबका इम्यून रिस्पॉन्स अगर एक जैसा रहा तो पॉपुलेशन पूरी वाइप आउट हो सकती है। तभी तो जैसे हम एनिमल्स में, वाइल्ड लाइफ में भी कंजर्वेशन करते हैं जेनेटिक पूल को मेंटेन करने के लिए। वो इसीलिए होता है कि अगर होमोजेनाइजेशन हो गई, अगर एक जैसे जेनेटिक मेकअप वाले टाइगर्स एक एरिया में मिल रहे हैं और एक डिजीज हो गई, तो वो सबको अफेक्ट करेगी, तो सबको ही मतलब पॉपुलेशन को खत्म करने में कारगर हो सकती है ऐसे एक डिजीज। तो होमोजेनाइजेशन होना बहुत अच्छी बात नहीं है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से। हाँ यार, इससे क्या होगा ना कि लाइक लोग बहुत ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाने लगेंगे। लाइक इफ आई वांट टू हैव अ बेबी देन आई विल गो फॉर द परफेक्शन, लाइक कि उसमें सब कुछ हो। सो rather इन प्लेस ऑफ और इनहेरेंट क्वालिटीज हम उसे जेनेटिक एनहांसमेंट्स के बेसिस पे देखेंगे और जज करेंगे। इससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ सकता है कि मतलब सबके इंटरेस्ट्स इंडिविजुअल के अलग होते हैं, बट सभी फिर ट्राई करेंगे कि हम सभी फील्ड में स्पेशलाइज करने की कोशिश करें, तो एफिशिएंसी इससे कम हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन भी ज्यादा बढ़ जाएगा ना। और इंडिविजुअलिज्म कम होती है ऐसा करने से, क्योंकि सबको ही सब कुछ सेम काम करने लगेगा, तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन वगैरह ये और स्पेशलाइजेशन कम हो जाएगी। तो आई बोल रही थिंक हमने बेबीज काफी पॉइंट्स के डिस्कस राइट कर पर लिए। वायलेट नहीं होगा क्या? वायलेट द राइट ऑफ द बेबी। हाँ, वो हमने एथिकल कंसर्न्स में बोला था कि चाइल्ड के मतलब बॉडी में हम चेंजेस ला रहे हैं विदाउट सीकिंग द अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड, एक तरह मेंबर से। मेंबर जो मैंने वो जेंडर वाला वही हाँ। बोला था मेंबर। हाँ हाँ, आ गया हाँ, याद, और आ गया। ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी कम होती है चाइल्ड की अपनी बॉडी पर। कंक्लूड करे फिर। हाँ, आई थिंक टाइम भी खत्म हो रहा है। हाँ हाँ, 3 मिनट्स तक। और कोई पॉइंट तो बचा नहीं, बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया, बहुत बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। क्रिस्पर कैस9 के नोट्स मैं डिबेट वाले ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा अभी, ये हाँ खत्म होने उसकी, के बाद। और ना वो जो ओके। डेट है वो भी एक बार देख लेना। आप बोल रहे थे ना कि डेट के लिए श्योर नहीं है कौन सी, तो वो भी एक बार देख लेना। हाँ ठीक है, कंक्लूड कर दूं। हाँ हाँ, कंप्लीट करते हैं। नो इश्यूज स्थिति। Three, in terms of designer baby, proceeding cautiously and ethically is crucial to avoid unintended consequences and uphold the values that define us as a society. Let us be vigilant in protecting the inherent worth of all individuals and consider the long term
implications of this technology on future generations. Thank you for participating, everyone. It was very encouraging session with you all. Thank you.